Good evening, viewers. This is anchor Kekrizan Solo. You're now watching Hornbilltv's Prime Time. First, the headlines. A special flight carrying Mumbai terror attack accused Tahawwur Rana has landed at the Palam airport in Delhi. Security has been stepped up outside Patiala House Court, where Rana is likely to be produced on Thursday following his extradition from the US, an official said. The Enforcement Directorate arrested the former chairman of a Karnataka-based Cooperative bank on April 9 in the 63 crore financial irregularities case, according to latest updates. In a significant development for Indo-US trade relations, the United States has granted a 90-day relief on tariffs to India. The move is being seen as a major step forward in the ongoing negotiations aimed at strengthening bilateral trade ties. Defence Minister Rajnath Singh on Thursday announced that the Ministry of Defence will observe 2025 as the year of reforms, aiming to transform the Indian Armed Forces into a technologically advanced, combat-ready force capable of conducting multi-domain integrated operations. Those were the top headlines, and now for the news in details. First off, a Class 8 student of a private school in Tamil Nadu, Coimbatore, was forced to take her exams outside the classroom, apparently because she was menstruating. A video of the girl, who happens to be a Dalit, sitting on the steps of the classroom was widely circulated, drawing actions from the authorities. This incident took place at Swami Chipavananda Matriculation School in Sengutai Palayam. On April 5th, the girl had her first period but still came to school to write her annual exams. However, the school administration reportedly denied her entry into the classroom and made her sit near the door to take the test. An inquiry has been ordered and the headmistress of the school has been suspended. Coimbatore District Collector Pavan Kumar J. Giriyapanawar said local police have launched an investigation into the incident. Meanwhile, the inspector of school has been directed to submit a detailed report to the district administration office. School Education Minister also has assured that there will be zero tolerance for any kind of oppression against children. என்னுடைய பேர் வி தம்புங்க. நான் மக்கள் விடுதலை முன்னணியில் மாவட்ட அமைப்பாளராக சமூக பணி செஞ்சு வர்றேன். பொள்ளாச்சி கிணத்துக்கடவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செங்குடுப்பாளையம் கிராமத்தில் சோமி சிப்பவானந்தா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் மேல்நிலை பள்ளியில் என்னுடைய பேத்தி 8ஆம் வகுப்பு படிச்சுட்டு வர்றாங்க. 8ஆம் வகுப்பு படிச்சுட்டு வரக்கூடிய என்னுடைய பேத்திக்கு 5ஆம் தேதி முதல் பூப்படைப்பு நடந்தது. அதனால் முழு ஆண்டு தேர்வு நடைபெறதால் என் பேத்திக்கு கொண்டு போய் அங்கே விட்டோம். என் பேத்தியை அவங்க உள்ள அமர வைக்காமல் இப்போ எல்லா குழந்தைகளோட சேர்ந்து முழாண்டு தேர்வு எழுத வைக்க விடாமல் வெளியில் தரையில் உட்கார வச்சு, திண்ணையில் வாசப்படியில் உட்கார வச்சு, தனியாக உட்கார வச்சு தேர்வு எழுத வச்சுருக்கிறாங்க. இது மிகப்பெரிய மனவேதனை ஏற்படுத்துது. கல்வித்துறை அதிகாரிகளும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கமும் அந்த பள்ளிக்கூட நிர்வாகத்தின் மேலே உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லி மக்கள் விடுதலை முன்னணி சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறோமுங்க. A special flight carrying Mumbai terror attack accused Tahawwur Rana has landed at the Palam airport in Delhi. Security has been stepped up outside the Patiala House Court, where Rana is likely to be produced on Thursday following his extradition from the US, an official said. Upon his landing at the Palam airport in Delhi, the National Investigation Agency has begun the procedure to arrest 2611 terror accused Tahawwur Rana, and security has been stepped up outside Patiala House Court, where Rana is likely to be produced on Thursday following his extradition. देखिए, ये बहुत मुश्किल काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कर लिया गया। ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण इतना मुश्किल काम था, आप समझ सकते हैं। अमेरिका से किसी का एक्स्ट्राडिशन करा के और इंडिया में ले आना, वो भी तहव्वुर राना जैसे एक क्रिमिनल का,
तो मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उतना बड़ा एक अपराधी 26/11 का मुंबई का जो कांड हुआ, 200 के लगभग लोग मारे गए उसमें, और 2009 से वो अमेरिका में अपना ये कर रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। यूएस कोर्ट ने भी सारे एप्लीकेशंस को उसके डिनाइड कर दिए। डिप्लोमेसी लेवल पर देखी जाए तो कितनी बड़ी जीत है ये? डिप्लोमेसी लेवल पे इसी को कहते हैं कि देखिए, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा रिलेशन अमेरिका से या अन्य देशों से भी जो है, आज अमेरिका जैसे देश से हमारा रिलेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से हम सफल हुए हैं, वहाँ कोर्ट ने भी लगातार उनको 2-2, 3-3 बार जब भी वो गए तो कोर्ट से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला, और नतीजा है कि आज उनका प्रत्यर्पण भारत में हो रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों को मानना पड़ेगा लोहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इतना बड़ा काम भी हो सकता है। अभी देखिए, दूसरी जो बात है, अभी टैरिफ में भी हाँ हम लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ हुआ, और चाइना पर जो है सो 125% लाद दिया गया। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो डिप्लोमेसी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही सफल। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी। तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए। सर, लेकिन गृह मंत्री तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अब अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूँ ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता के लिए भी कहिए ना कि वी फेल्ड, ये होना चाहिए ना। फिर मैं मणिपुर पर क्यों ना आपसे पूछूं कि व्हाई डिड यू फेल देयर। बहुत सारे सवाल हैं। एक विशाल हृदय से चीजों को देखना चाहिए, और ऐसे उपलब्धियां तो हम पूछ लेंगे कि वाराणसी में क्या हुआ अभी बीते दिनों। There was on a 26/11 attack. Accused who landed in Delhi. Heading on to the next news. The Enforcement Directorate ED arrested the former chairman of Karnataka-based Cooperative Bank on April 9 in a ₹63 crore financial irregularities case. RM Manjunatha Gowda, the ex-chairman of a Shimoga District Cooperative Central Bank, was presented before a special court, which later sent him to 14 days ED custody under the Prevention of Money Laundering Act, also known as PMLA. This comes a day after the ED carried out a raid in Bengaluru and Shimoga in the probe into the financial affairs of the bank. Large-scale misappropriation of funds took place at the said branch, which was orchestrated primarily by the branch manager, B. Shobha, on the instructions of Gowda, said the ED. The two accused, along with their legal representatives, remained unreachable in their responses to the charges filed by ED. According to the charge sheet filed by Lok Yukta Police, Shobha was accused of laundering ₹62.77 crore. According to the agency, Shobha used forged documents to open fake gold loan accounts without the account users and their knowledge. The fraud generated by Shobha in conspiracy with other co-accused were laundered and handed over to the Gowda police, it said. According to the agency, Gowda purchased a number of real estate and real estate holdings, and the Lok Yukta police charge sheet noted that he was in possession of assets disproportionate to his known sources of income. US President Donald Trump on Wednesday announced a 90-day pause on his reciprocal tariff just 24 hours after it came into effect, sparking fears of a major trade war, triggering a global market meltdown and raising concerns of a looming global recession. However, he announced an immediate increase of tariffs on China to 125%, up from the previously declared 104%. The Xi Jinping-led
country remained unfazed and hit back at Trump's 104% tariffs with its own additional tariffs of 84%, up from the previous 34% on all American goods. China vowed to fight to the end, and according to the president, the 90-day tariff freeze applies only to the countries that have not taken retaliatory action against the United States in response to the earlier tariff increase. Why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. And now I've reversed it. It's for a short period of time, but we made $2 billion. We're making now $2 billion a day. And somebody had to do it. Roger actually said it. Charles Schwab was here a little while ago, one of the great financial people, and he said he's been waiting for 40 years for somebody to do what I did over the last month. And if you didn't do it, you wouldn't have a country. It wouldn't be sustainable. So I'm honored to have done it. And, you know, look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. And we have many other countries, as you know, many more than 75. And they all want to come, and they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John, they'll do somebody, they'll go through somebody, but they're all calling, how do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. A man like Roger Penske, I don't want to get him in trouble with China, so I won't, but he would know that you have to, someday you have to cut the bow and you have to do what you have to do, right, Roger? And that's what I did, and I'm very happy to have done it. We'll now take a short break. Stay tuned for more updates. छोटू बच्चा खान के सिखाबी खाना ना खा को दे और खा पीछे दे होदाय हाथ तो सपा पानी और साबुन ब्रा दोलाबी बच्चा खानते आयरन और विटामिन ए डेफिशिएंसी तो बेशी कॉमन आसे इतो निमिते बच्चा खान के होदाय येलो रेड और ग्रीन कलर लगा फ्रूट्स और सब्जी खान जी होइले भी खिलाबी बच्चा खान के सिखाबी खाना और खासकर ब्रेकफास्ट तो कित्याबी ना खाई किना ना छारीबी बच्चा खान के सिखाबी अनहेल्दी स्नैक्स चिप्स फ्राइज नमकीन चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स खान छारीकिना हेल्दी स्नैक्स खान होल फ्रूट्स दही और अनसाल्टेड नट्स खान ही खाबी इतु होदाय याद रखीबी बच्चा खान के टिफिन ते हेल्दी खाना ही दिबी और ताई खान के टिफिन ते सीरियल्स और पल्सेस के मिलाई के ना दिबी और एकता फ्रूट ना होइले वेजिटेबल तो जी होइले भी डाली दिबी
Welcome back, viewers. Heading on to the next news. India is set to acquire 26 Rafale marine fighters aircraft from France as the centre cleared a government-to-government deal, reported ANI, citing government sources on Wednesday. The deal, which is valued at Rs 63,000 crore, is expected to be signed in the coming weeks, the news agency further reported. Moreover, the deal includes 22 single-seater aircraft and 4 twin-seater variants designed specially for the Indian Navy's operational requirements. The deal will also ensure 5 years of performance-based logistics support and spares for the 36 Rafale jets already inducted into the Indian Air Force in 2016 under a contract worth Rs 59,000 crore. The 26 Rafale AM jets manufactured by Dassault Aviation are expected to be delivered within 37 to 65 months following the signing of the contract, with all jets slated for delivery by 2030 to 2031. This deal mirrors the structure of the agreement made for the IAF Rafale jets, further cementing India's strategic partnership with France. Beyond the Rafale AM deal, the agreement is set to enhance the capabilities of the Indian Air Force. The new Rafale marine aircraft will help upgrade the IAF's buddy-buddy aerial refueling system, enabling up to 10 Rafale jets to refuel each other mid-air, significantly increasing their operational range. Defense sources also suggested to ANI that the deal may include ground-based equipment and software upgrades for the IAF fleet, ensuring seamless integration across both the IAF and the Indian Navy's Rafale jets. These upcoming twin-engines DAC-based fighters are expected to be the naval counterpart of the Advanced Medium Combat Aircraft AMCA currently in development for the IAF. In a stunning turn of events, Anita Devi, a mother from the Aligarh, Uttar Pradesh, has left her home with jewelry and cash to elope with Rahul, the man scheduled to marry her daughter, as per the Aligarh police. The incident occurred just days before the wedding, which was set to take place on April 16th. The police investigation revealed that Anita Devi had been secretly planning to run away with Rahul. The incident came to light when Anita's family reported her missing, and Rahul, a resident of the Dadun police station area, was set to marry Anita Devi's daughter. Speaking on the case, Circle Officer of Eglas Mahesh Kumar said on investigating, it was found that the applicant's daughter marriage was scheduled to take place on April 16, 2025 with Rahul, and a youth resident of the Dadun police station area. Before the marriage, the applicant's wife Anita Devi was found to have gone with Rahul. In connection with the following case, a case has been registered in Madrak police station area and a team has been formed for search. Anita Devi's husband Jitendra Kumar expressed shock and confusion, stating that his wife had been preparing for their daughter's wedding and had been in regular contact with him until 10:30 a.m. local time on the day she disappeared. The police have registered a case and formed a team to search for the missing women. इगलास अवगत कराना चाहता हूँ, एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। As countries worldwide are navigating the complexities of trade tensions and tariff imposed by the United States, Pankaj Chadda, partner and CEO, Jyothi Steel Industries and Chairman, Engineering Export Promotion Council, EEPC, on Thursday said the council has asked the government to reintroduce the interest equalization scheme for the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Stating that India cannot keep all its eggs in a basket for the US, he suggested that the country will have to discover new territories like Latin America, Central America, West Africa and expand businesses there.
देखिए, सरकार के पास फिस्कल बेनिफिट देने के लिए बहुत लिमिटेड हेडरूम है। जो बजट में है वो 2250 करोड़ अनाउंस है, उसी के ऊपर तो सरकार जा नहीं सकती, कोई जो लिमिट है जो फाइनेंस ने दिया हो। हमने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को एमएसएमई के लिए री इंट्रोड्यूस करने की बात की है। आई थिंक इट इज बीइंग वेरी क्लोजली एंड लुक्ड एट। हमने बोला है कि आप इमीडिएटली इसको आप एग्जीक्यूशन में डालिए। ये 31 दिसंबर तक था, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ, तो वो सरकार देख रही है और मेरा मानना है कि वो इमीडिएटली आ जाएगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमने ये सरकार को बोला है कि अब हमें डी रिस्क तो करना पड़ेगा यूएसए से। अब यूएसए के ऊपर पूरा सारे एक बास्केट में डाल के तो फायदा नहीं। अब तो हमें डी रिस्क करना है, तो हम कहाँ कहाँ करेंगे? हम डी रिस्क करेंगे लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। हम ये नई टेरिटरीज में भी तो जाएंगे और वहां हमारा ट्राई करेंगे, हमारी छवि हम रखें और हमारा एक्सपांड करें हमारा बिजनेस इसमें। तो ये सब के लिए हमने तो यही बोला है कि अगर हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है उनको हमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, उनको थोड़ा एक्सपोजर देना पड़ेगा, रिवर्स बायस, उनको ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा। तो एमएआई स्कीम को आप जो आपका जो चल रहा है उसमें हमें कुछ इसमें कुछ सपोर्ट करिए, ताकि एमएसएमई ये सब चीजों में फेयर्स में अपना ब्रांड प्रमोट करके ब्रांड इंडिया करे। और तीसरा, हमने ये भी बात की है कि जब हम ये सब टेरिटरीज में जाएंगे तो पॉइंट ये है कि ये सब तो थोड़ी रिस्की कंट्रीज हैं, इनमें पेमेंट की प्रॉब्लम है, सम एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम आर इन सी कैटेगरी। तो हमने बोला है कि जो अभी फिलहाल सी कैटेगरी में आई थिंक ईसीजीसी का कवर बड़ा लिमिटेड है, ये नहीं है, सम में है, सम ये जनरली वेरी लिमिटेड है। हमने बोला है कि आप देखिए कि इस पे थोड़ा होलिस्टिक व्यू लीजिए कि जब हम नवे टेरिटरी में जाएंगे हमें थोड़ा तो क्रेडिट देना पड़ेगा टू मेक आवर बिगनिंग देयर। तो आप ईसीजीसी को बोलिए कि इसको थोड़ा होलिस्टिक व्यू से देखें विद ड्यू सेफगार्ड, ये नहीं तो गवर्नमेंट हैज सेड कि देन दे विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग with Ministry of Commerce, EPC and at ECGC and try and find a way कि ये जो कैटेगरी सी कंट्रीज जो है इनमें हम कितना हेडरूम दे सकते हैं ताकि हम इस पे कोई क्रेडिट रिस्क कवर करें, क्रेडिट इंश्योरेंस करें, ताकि हमारे एमएसएमई वाले लोग ये सब जगह भी अभी माल बेचें, क्योंकि अब वी हैव टू डी रिस्क। हम अपना सारा एग्स अमेरिका की बास्केट में डाल के अब नहीं कर सकते, अब वो ट्रस्ट अब नहीं रहा। So it is bad. This is a time for us to de-risk. So hopefully this is a very proactive step जो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है we'll organize a meeting. आप देखिए क्या बेस्ट हो सकता है। We will try within the framework भी ECGC को नुकसान नहीं होगा, पर कहीं चीज हो सकती है तो एटलीस्ट एक्सपोर्टर का भला हो जाएगा। That is I congratulate and the ministry for taking this proactive step. In a significant development for Indo-US trade relations, the United States has granted a 90-day relief on tariffs on India. This move is being seen as a major step forward in the ongoing negotiations aimed at strengthening bilateral trade ties. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal welcomed the decision, stating that India is very efficiently handling the whole thing. He highlighted that Prime Minister Narendra Modi and former US President Donald Trump had already laid the groundwork for deeper economic cooperation. In February, Prime Minister Modi and President Trump had come to a decision to sign a bilateral trade agreement aimed at boosting mutual relations and easing trade between the two nations, which also take the trade to 500 billion to create more employment opportunities and strengthen the nation's economy. भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा, देशवासियों को नौकरी के
और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। Those are all the updates for now. Stay tuned for more and keep watching Hornbill TV.